How is the weather there in Honduras now? Everything is perfect right now. The weather is perfect, but the COVID is a big problem for us at this moment. Acha, still going on. Yeah. Yes, with the Omicron Yeah. subvariants. Yes. Same here. We have also the same problem. Dr. Meshram, can we start now? Has Manish joined? I don't think so. Okay, I think we'll start.
Yeah. And by the time Manish will join. Yeah. Dear friends, good evening, good morning, buenos dias. I am Dr. Chandrasekhar Meshram, co-opted trustee of World Federation of Neurology and chief coordinator of public education activities of Indian Academy of Neurology. And I welcome you all for this fourth session on loss of consciousness on behalf of Indian Academy of Neurology and World Federation of Neurology. This series, a week-long series to celebrate the World Brain Day. Indian Academy of Neurology has made an ambitious program to have 100 activities during the World Brain Week. And I'm sure that with the dynamic leadership of Dr. Nirmal Surya, we'll cross that figure. I am great pleasure in welcoming Dr. Nirmal Surya, President of Indian Academy of Neurology. Today, I have an immense pleasure to welcome my friend, Professor Marco Tulio Medina from Honduras. He is a co-opted trustee of World Federation of Neurology. He is Secretary General of Tropical and Geographical Neurology Specialty Group of WFN. He is the President of Pan-American Federation of Neurological Sciences. His areas of interest are neurology education, epilepsy, neurocysticercosis, apart from tropical neurology. Welcome, Professor Marco Medina. We will have this session on loss of consciousness will be moderated by Dr. Manish Modi, who is a professor of neurology at PGI MER Chandigarh. He's a convener of tropical neurology subsection of Indian Academy of Neurology. I also welcome Professor Malcolm Jairaj, who is professor of neurology at Stanley Medical College, Chennai. Dr. Birinder Singh Paul, who is a professor of neurology at Dayanand Medical College and Hospital, Ludhiana. And Dr. Bhavna Sharma, who is professor and head of neurology, SMS Medical College, Jaipur, with the faculty. And I also welcome you all and those who have joined in the room. I can see Dr. Asta joined there. Welcome, Dr. Asta. Tomorrow we will have a session on neuromuscular weakness. The session will be moderated by Professor Satish Khadilkar. The international faculty for tomorrow's session will be Professor Raisuke Takahashi from Japan, Professor Laszlo Vexi from Hungary, and David Garcia Azorin from Spain. And the national faculty will have Dr. Shefali Gulati from Delhi, Stuti Nair, Swati Shah, and Sandeep Paul from Calcutta. So I once again welcome you all, and I request Professor Nirmal Surya to give his welcome address. Thank you. Hello, everybody. Today we are on to the fourth day of the session, which we started. In fact, today may be the fifth day because on 21st we had curtain raiser, Dimag Pe Charcha, and the eminent Professor Wolfgang and Tisha, as well as Hamdan Basari was part of that. So there was a curtain raiser for World Brain Week, and we have been doing very well. Today we had a session by a neuro rehab subsection at 4 o'clock, and now very important is आज के बारे में जो बात होने वाली है वो हो रही है बेहोशी के ऊपर. तो आप बेहोश क्यों हो जाते हैं, बेहोश होने का क्या माजरा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, कभी स्थिति गंभीर है, क्या गंभीर है, क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, क्यों बेहोश होना एक सीरियस बीमारी है, और इन सब के बारे में आपको बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मनीष मोदी उन सब से बात करेंगे. उसमें जयपुर से भावना शर्मा और मालकम जयराज चेन्नई से, डॉक्टर बीरेंद्र पॉल लुधियाना से, एंड आवर इंटरनेशनल गेस्ट प्रोफेसर मार्को मेडिना from Honduras. So we have got a mix
of international and national panel. But ladies and gentlemen, हम कई बार बात करते हैं कि हम ऐसा कुछ होगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन क्या रियल में क्या कारण है बेहोशी के? All these gentlemen are there to tell you, guide you, and tell you when you should be serious and not take it lightly, because anybody who become unconscious is a serious problem. That is our commitment. Indian Academy of Neurology is going to not only continue the awareness program during this week, but will continue our effort to reach out to the common person in India. And we are committed to create an awareness and be there for you in your difficult time. Thank you once again. Those who are not been able to listen to the previous program, log on to our channel of Indian Academy of Neurology on YouTube, and you can access all the previous talks and other important sessions. Thank you very much. Once again, over to Chandrasekhar. Yeah, thank you very much, Dr. Nirmal Surya. And now I have a pleasure in requesting Professor Marco Medina to give his presentation. Professor Marco Medina. To start the session, we will first talk about the importance of epilepsy and loss of consciousness. Professor Marco Medina. And after his talk, then we'll have a panel discussion. And Dr. Manish Modi has joined. I hope, Manish, you are well. And thank you for taking over this responsibility. Dr. Gagandeep Singh was supposed to moderate this session, but he had to go in a remote place. Sir, thank you very much, sir, for inviting. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you very much, Professor Chandrasekhar Mishran, who is our actual co-opted trustee and the chairman of the Tropical Neurology WFN Super Specialty Group. I am very pleased also to have this invitation coming from Professor Nirmal Surya from the Indian Academy of Neurology. So I will discuss in the next 10 minutes loss of consciousness and the association with the epileptic syndromes. I would like to highlight the importance of this World Brain Day, and we are very pleased that the Indian Academy of Neurology has been devoting this week for this important celebration. So my lecture will go on the concepts that has been developed by the International League Against Epilepsy. This is a paper, or this concept is coming from Fisher et al. Just 1 second, Professor Marco, put it on the slide mode. It is not on the slide mode. Okay, I will try to do it. I will try to do it. I am having problem to put on the side mode. Okay, doesn't matter. We continue with, we can see your slides. Go ahead. Okay, thank you so much. Thank you. So regarding the conceptual definition of seizures, as we know, the ILAE started the concept of a epileptic seizure as a transient occurrence of signs and or symptoms due to a abnormal, excessive, and synchronous neuronal activity in the brain. And at that time, epilepsy was considered as a disorder of the brain characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures and by the neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences of this condition. So at this moment, we are having this operational clinical definition of epilepsy.
when the epilepsy is a disease of the brain defined by any of the following conditions: having at least 2 unprovoked or reflex seizures occurring in 24 hours apart, 1 unprovoked or reflex seizures, and the probability of further seizures similar to degenerate recurrence, at least 60%, or the diagnosis of an epilepsy syndrome. And as we know, we are evolving on this specific concept of seizure type that can have or not consciousness problem. So we are having seizures type that can be subdivided as focal seizures or generalized seizures or unknown seizure. But the second step will be the epilepsy types, either focal epilepsy, generalized epilepsy, combined generalized and focal, and unknown. And then the third step is the epilepsy syndrome. Epilepsy syndrome or epileptic syndromes have been developed by several schools around the world, and mainly the School of Marseille with Professor Gaston, and then Professor Dravet, Bureau, Janton, amongst others. And we have here the classification of seizure type that can be subdivided in focal, having a non-consciousness problems or having a impaired awareness, which is a very important concept. And then we can have also motor or non-motor focal onset. On the generalized onset, you can have motor, either tonic-clonic, other motor, or non-motor. All of them, the vast majority of them, are having consciousness problem. And then if we subdivide the motor onset, you can have motor onset with automatism, or atonic, or clonic, or epileptic spasm, hyperkinetic, myoclonic, and tonic. And then non-motor onset can be subdivided as a autonomic, behavioral arrest, cognitive, emotional, and sensory. And focal can go to a bilateral tonic-clonic involvement that is associated with consciousness problem. And then generalized onset can be subdivided as motor and non-motor. Under the motor type, you can have tonic-clonic that usually is associated with consciousness problem as well as clonic-tonic. But on the myoclonic side, you can have a non-consciousness problem. And then you can have the sequence of myoclonic, tonic-clonic seizure that you can see on juvenile myoclonic epilepsy. And then infantile spasm, atonic, or myoclonic atonic. And then the non-motor can be subdivided in typical absence, atypical absence, the myoclonic absence that was described by Tassinari and Michel Bureau, and ally myoclonic. So the problem with consciousness when you're having a seizure can be associated either by the bilateral involvement of the brain or the involvement of the thalamic circuit, or having a involvement on the limbic area. And so we will see some cases. For instance, this is a patient having a hyperkinetic seizure. And during this hyperkinetic seizure, the patient is having a awareness problem, is having a consciousness problem during this type of seizure that has been associated with a frontal lobe focal seizure.
Or then this is a patient with a motor focal seizure that evolves to a bilateral involvement, having a tonic-clonic seizure. The frontal lobe involvement and then the bilateral involvement of this seizure is evident. This patient was having a frontal lobe angioma, cavernous angioma, that was later on was resolved by a surgery. And then we will see epileptic syndromes in a patient having a Lennox-Gastaut syndrome with a tonic seizure. And you can see here the tonic posture of the patient and having a loss of consciousness at that moment. On the Lennox-Gastaut syndrome that was initially described by Lenox and then by Dr. Gaston and Charlotte Dravet, there are several seizures that are associated with a loss of consciousness, either tonic seizures, atypical absences, or focal seizures with awareness impairment. This syndrome, the Lennox-Gastaut syndrome, was described by Charlotte Dravet in her thesis that at that time she was naming this condition as l'encéphalopathie épileptique de l'enfant avec pointon long diffuse. The epileptic encephalopathy of the children, the infant, and associated with a diffuse spike and wave complex. This syndrome is one of the syndromes that was initially associated with the name of epileptic encephalopathy. That means that there are a diffuse involvement of the brain producing cognitive impairment associated with the epileptic condition. Later on, Professor Dravet described les épilepsies graves de l'enfant, a syndrome that was initially named as a severe myoclonic epilepsy and actually represent the Dravet syndrome. This syndrome is associated with myoclonic jerks, with febrile seizures, but also with a severe consciousness problem such as the absence status that was named as a obtundation status. For instance, this patient is having at this moment a absence status, having myoclonic jerks plus the consciousness problem during these seizures. And this seizure is, this type of epilepsy is also associated to other syndrome, which is the Jeff Plus syndrome. And Dravet syndrome has been associated with sodium channel mutations. The other important syndrome that has been on the epileptic syndromes has been highly evaluated has been the childhood absence epilepsy that was initially described by Professor Samuel Auguste Tissot in Switzerland when he was highlighting a young lady that was having a consciousness problem where the patient was very frequently having short episodes of problems of connaissance, consciousness problem. This syndrome is the childhood absence epilepsy and is one of the most frequent idiopathic generalized epilepsy
representing 10 to 12% of epilepsy in children under 16 years old. And we have here a case having a absence epilepsy with a consciousness problem. He's hyperventilating during the clinical evaluation, and right now he's having the absence. And she was not remembering the words that were given during the seizure. And this is the specific EEG spike and weight 3 Hertz. This syndrome has been associated with several mutations. For instance, this one that was discovered in Mexican and Honduran patients on the GABA beta 3 receptor that is associated with a thalamic involvement of the thalamic reticuli cells. This is the receptor, the GABA beta A receptors, where the mutation were found in this specific case. And then one of the most frequent epileptic syndromes is the juvenile myoclonic epilepsy, which is the most common frequent problem of epileptic seizures during adolescence, and associated with tonic-clonic seizures or myoclonic tonic seizures or absences. And was the first cases were described by Professor Léon Raveau in Paris. And we can see here a patient having a seizure, a myoclonic seizure. This problem was described by Professor Dieter Jans and also Professor Antonio Delgado Escueta and Professor Constancio Castel and Mendelaharzo. And I would like to highlight that Professor Castel and Mendelaharzo described almost at the same time of Professor Jans this syndrome. And the myoclonic jerks were usually without a consciousness problem. But when the patients were having tonic-clonic seizure, obviously the patient was having a consciousness problem. And he was describing this syndrome as a bilateral and aware myoclonic epilepsy. But that is a partially true, because just the myoclonic jerks were without any consciousness problem. So this is a very specific syndrome that is associated with consciousness or non-consciousness related seizures. So finally, I would like just to highlight that a lot of epileptic syndromes are associated, as you have seen, with consciousness problem that is part of our evaluation when you are evaluating a patient with a loss of consciousness. Thank you so much. Thank you, Professor Marco, for that excellent review. It was educative not only for general public, but then the general physicians and neurologists as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Great pleasure. Now I hand over to Professor Manish Modi. Yes, sir. I'm here, sir. Go ahead with the panel discussion. Yeah. So I think we have a mix of both physicians, doctors, neurologists, as well as patients also. So we will use both languages, English as well as Hindi. So should I start in Hindi, sir, once? Okay, carry on. Yeah. So let me start with Dr. Birinder in Hindi. Dr. Birinder, अभी डॉक्टर मार्को ने तो हमें मिर्गी के दौरों के बारे में बताया, different kinds of epilepsy, which I and most of us feel is one important cause of unconsciousness here, loss of consciousness, right? So पहले तो what is this loss of consciousness? आप जनरल पब्लिक को
मतलब कैसे अवेयर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में? देन आई विल पास ऑन द क्वेश्चन टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट रिगार्डिंग द कॉजेस। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जनरल पब्लिक के लिए आप कैसे बताते हो, व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस? और आगे कारण डॉक्टर भावना हमें सारा एक्सप्लेन करेंगी। जनरल पब्लिक में ले मैन लैंग्वेज में आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन। कॉन्शियसनेस मतलब जब हम अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग, अपने लोगों या किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी को नोटिस करते हैं, उसको कॉन्शियस स्टेट कहते हैं। जैसे हम ओरिएंटेड हैं, भी ये मीटिंग चल रही है, हम मीटिंग सुन रहे हैं, हमारी तरफ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कॉन्शियस स्टेट है। और इस कॉन्शियस स्टेट को मेंटेन करने के लिए ब्रेन को सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो ब्लड के थ्रू हमें मिलती है। अगर किसी कारण से वो फंक्शनिंग इंटरप्ट हो रही है, जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी ड्यू टू एनी कॉज, या ब्रेन में हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा, या ब्लड सप्लाई कम होगी, या किसी भी कारण से, क्योंकि मेन ब्लड सप्लाई का सोर्स हमारी हार्ट होता है। और मतलब हम अपने मरीजों को कहते हैं भी आप बेहोशी के 2 कारण है, या तो ब्रेन ने ऑक्सीजन और ब्लड या ग्लूकोज को यूज नहीं किया, या किसी और कारण से ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन मिली नहीं, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन नहीं कर पा रहा। जब हम वो फंक्शन नहीं कर पा रहे तो हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, या सिर्फ चक्कर आ सकते हैं, या थोड़ी सी बेहोशी या अनबैलेंस फील हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितनी देर तक ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिला। अगर वो टेम्परेरी हुआ तो उसको ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और मेडिकल टर्म में हम सिनकोप भी कहते हैं। और या अगर वो ज्यादा देर तक रहता है तो उसको लंबे टाइम पे अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मार्को ने बताया कि एपिलेप्सी अगर की वजह से ब्रेन ऑक्सीजन नहीं यूज कर पा रहा है, या ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगी, तो हम देर तक भी अनकॉन्शियस रह सकते हैं। सो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर भावना, इसी हमारी बात को आगे क्लैरिफाई करते हुए, सो डॉक्टर मार्को के लेक्चर से वन थिंग, एपिलेप्सी, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी किस तरह से अनकॉन्शियस हो सकते हैं वो हमें बताया गया। डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें बताया कि कैसे कॉन्शियस लेवल मेंटेन होता है, कैसे अनकॉन्शियस होता है। तो आपके एक्सपीरियंस में या लिटरेचर के मुताबिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के क्या इंपॉर्टेंट कारण है, और किस तरह से जनरल पब्लिक उसके बारे में थोड़ा अवेयर हो सकती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फिर उसके और ज्यादा साइंस एंड सिम्टम्स हम डॉक्टर जयराज से भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन योर एक्सपीरियंस एंड एज पर लिटरेचर? नमस्कार डॉक्टर मोदी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एक बहुत ही बड़ी टर्म है। यस। इसका मतलब होता है कि हमें हमारे और आसपास के वातावरण के बारे में पूरी तरह जानकारी है, और हमारी रिएक्टिविटी एनवायरनमेंट के प्रति पूर्ण रूप से है। अगर हमें कोई सवाल पूछा जाता तो हम उसका एप्रोप्रिएट जवाब देते हैं, और हम वातावरण के प्रति पूरी तरह सजग होते हैं। परंतु ऐसा कोई भी कारण जो कि ब्रेन को या बॉडी के किसी अन्य अंग को इस कदर प्रभावित करे कि हमारे मस्तिष्क को अगर ऑक्सीजन या ग्लूकोज नहीं पहुंचे तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब अनकॉन्शियसनेस के कई कारण होते हैं, जैसे कि डॉक्टर मार्को मदीना ने बताया, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि दौरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, दौरे के अलावा भी अनकॉन्शियसनेस के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अनकॉन्शियसनेस किस एज में हुई। अगर किसी वृद्ध इंसान के अंदर अनकॉन्शियसनेस होती है तो हमें दौरे के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं उसको सिनकोप तो नहीं हुआ। सिनकोप का मतलब होता है कि हम थोड़ी देर के लिए, जैसे इंसान खड़ा है, सडनली उसकी आंखों के आगे जैसे बिल्कुल धुंधलापन सा आता है, पूरी बॉडी पेल सी हो जाती है, थोड़ा सा उसके पसीने से आते हैं, एकदम से पेशेंट गिर जाता है एंड देन सडनली उठ जाता है। सिनकोप एक छोटा टर्म है, पर सिनकोप के कारण बहुत सारे होते हैं। अगर किसी के हार्ट के अंदर हृदय गति की अनियमितता हो तो भी सिनकोप हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक एडम सिंड्रोम में हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज में हो सकता है, हार्ट के फर्स्ट सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक में, बंडल ब्रांच ब्लॉक में हो सकता है। अगर क्यूटी इंटरवल या एसटी सेगमेंट चेंजेस होते हैं कई बार, उनसे हो सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि किसी इमोशनल स्ट्रेस के अंदर सडनली किसी व्यक्ति के जो पैरासिम्पैथेटिक टोन होती है वो बढ़ जाती है और सडनली व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर के गिर सकता है, जिसे कहते हैं वेगल सिंकोप। इसके अलावा भी आप किसी तनाव की स्थिति में भी गिर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, कई बार यंग गर्ल्स के अंदर सडनली टेंशन की वजह से आप देखते हो कि लोग अटेंडेंट्स आके बताते हैं कि हमारी बच्ची बेहोश हो जाती है, बार बार दिन में कई बार हो जाती है। तो क्लिनिशियंस अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताते हैं कि भाई ये दौरा नहीं है, ये तनाव का दौरा है, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो बॉडी में, जैसे ग्लूकोज की कमी हो जाए तो अनकॉन्शियस हो सकते हैं। कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। और अगर हम दौरे की बात करें तो डॉक्टर मोदी, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड ऐसे कारण होते हैं जिसमें कि अदर देन एपिलेप्सी इंसान बेहोश हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क में कोई इन्फेक्शन हो, शुगर की कमी हो जाए, या जैसे कोई चोट मार्को मदीना ने बहुत सारे एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स के बारे में हमें बताया बचपन में, 15 से 20 साल की एज में। परंतु जो कई ब्रेन के कारण ऐसे होते हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, कई और इन्फेक्शंस और चोट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उनमें जो दौरे आते हैं वो क्लासिकल एपिलेप्सी से अलग तरह के होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत दौरे के बारे में और कारणों के बारे में आपको आइडिया दे रही हूँ। बाकी अनकॉन्शियसनेस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और हमेशा इसको सीजर से रिलेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमारी डिस्कशन चल रही है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में मिर्गी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, प्रोबेबली हर एज ग्रुप में। बट इसके अलावा एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हमें उस पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन से हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये दौरा था या कोई और रीजन था जिस कारण के पेशेंट बेहोश हुआ। ये भी हो सकता है कि पेशेंट को कोई और सीरियस बीमारी हो, दौरा ना हो, या मस्तिष्क में कोई सबकॉन्शियस माइंड में कुछ साइकेट्री प्रॉब्लम के कारण भी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। तो इसी को आगे इलेबोरेट करते हुए मैं डॉक्टर जयराज से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर आवर लिसनर्स ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ओल्डर एज ग्रुप में आपके एक्सपीरियंस में अनकॉन्शियसनेस के क्या क्या कारण, इंपॉर्टेंट कारण है, और एपिलेप्सी उसमें कहाँ पे, मतलब किस प्लेस पे आती है? ओल्ड एज से अबव 60 years of age या above 65 years, what are the important causes of loss of consciousness, sir? Dr. Jairaj. Yeah, thank you, sir. In the elderly age group, I'm sorry, No problem, sir. I think we'll have a mixture of both in the end. No issue. Right. No issue. The most common cause for a loss of consciousness, especially in the elderly age group, say about 60 years, certain things have to be kept in mind. First is the presence of their comorbid conditions. For example, diabetes. Patients with diabetes commonly experience alterations in their sugar levels, either it's either low or high. So these is one of the most common causes for patients to become unconscious. Secondly, the other metabolic causes in the form of alterations in sodium levels, especially hyponatremia, which is a very, very common cause of patients becoming unconscious. Thirdly, elderly people are prone to infections. So sepsis could be another cause for a gradual, since unconsciousness can happen acutely or subacutely or gradually. And sepsis also could be one very important cause. But apart from metabolic issues, the few other things that have to be kept in mind, especially in the elderly, is the presence of stroke. Now, stroke is a very, very important cause of loss of consciousness in the elderly. So when a patient suddenly falls into loss of consciousness, and one of the most important things that you would have to rule out is whether there has been a bleed in the brain or whether the flow to the brain has been affected. And sometimes this stroke can be accompanied by seizures also in the elderly. So that is one of the very important causes of seizures in the elderly. The other possibility is elderly patients, especially who are taking multiple drugs, especially blood thinners,
they are prone to develop subdural hemorrhages, and falls, and elderly falls, which also can lead to seizures and gradual loss of sensorium. So the elderly present a completely different subset of conditions which can cause a loss of consciousness, ranging from metabolic to traumatic to stroke. And of course, there are also a few conditions like seizures that happen exclusively in the elderly. For example, patient who would have had a stroke and had a scar in the brain, and following that he gets recurrent seizures. And recurrent TIAs, like recurrent minor strokes, can also lead to loss of consciousness. So as a neurologist, it is not that easy to find out the cause of loss of consciousness in a given patient. It needs a proper history, a proper examination, and a host of investigations to find out the exact cause of loss of consciousness. So हमारी अब तक की चर्चा से जो अभी तक हम समराइज कर पाए या जो हम टेक होम मैसेज ले पाए हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के डिफरेंट एजेस में डिफरेंट कॉजेस होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। एल्डरली में स्ट्रोक्स, इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक कॉजेस जैसे सोडियम लो होना या शुगर लो होना या शुगर बहुत बढ़ जाना या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना या किसी बॉडी की इन्फेक्शन के कारण ब्रेन की फंक्शनिंग कम होना, ये सारे कारण लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। सो इसके n नंबर ऑफ कॉजेज हैं और पेशेंट के प्रोफाइल हिस्ट्री के मुताबिक हम उस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो वापस हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाते हुए एक बार हम अपने प्रेसिडेंट सर से भी बात करना चाहेंगे कि उनके एक्सपीरियंस में एपिलेप्सी एल्डरली में और एपिलेप्सी यंग में किस तरह से डिफरेंट है। सर आप अवेलेबल हैं? डॉक्टर मेश्राम आप आंसर करेंगे? आई थिंक डॉक्टर निर्मल सूर्या इज देयर सर। I think they have left. Okay, so coming back to Dr. Brinder again, Dr. Yes. Brinder, Yes. Epilepsy in elderly and epilepsy in young, how they are different clinically and हम कैसे differentiate कर सकते हैं इस disease को? सर जैसे पहले भी बताया भी हर एक एज में डिफरेंट कॉज होता है एक बीमारी का। अगर Yes. हम एपिलेप्सी लें तो बच्चों में जैसे प्रोफेसर मार्को ने बताया प्राइमरी एपिलेप्सी जो इंटरनल बिकॉज ऑफ ब्रेन की इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस से होने की वजह से या ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से कॉमनली बच्चों में वो कारण होते हैं। Right. उसमें यूजुअली बच्चों को डिफरेंट टाइप के सीजर हो सकते हैं एक ही मतलब पीपल में। उसमें जनरलाइज सीजर भी हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं जिसको मायोक्लोनिक सीजर कहते हैं, कई बार फोकल मतलब एक हाथ की मूवमेंट होती है। बच्चों में सिंगल बच्चों में डिफरेंट टाइप के सीजर कॉमन है बच्चों की एपिलेप्सी में। वेयर एज इन ओल्डर पेशेंट, जब ओल्डर एज ग्रुप की बात करें उनमें 90% प्रॉब्लम बाहर से आई होती है। इंटरनल जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस या इंटरनल ब्रेन के सर्किट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सर। जैसे ओल्ड एज में कोई जैसे डॉक्टर जयराज ने बताया कोई स्ट्रोक हो पुराना या कोई नया स्ट्रोक हो, वो एक एपिलेप्टिक अटैक प्रोड्यूस कर सकता है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो हमने देखा है, ओल्ड एज में एपिलेप्सी के साथ साथ जब आप इन पेशेंट को एग्जामिन करते हो तो आपको साथ में एडिशनल कुछ न्यूरोलॉजिकल साइन इन द फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, फोकल वीकनेस जरूर मिलती है जो कई बार बच्चों में नहीं मिलती। बच्चों में बेसिकली मेंटल डेवलपमेंटल का एब्नॉर्मलिटी मिल सकती है एग्जामिनेशन में, वेयर एज ओल्डर पर्सन में आपको कोई लकवे के सिम्टम मिल सकते हैं, एक साइड की वीकनेस मिल सकती है जो कॉमन कॉज है। सेकेंड ओल्ड एज में कॉमन कॉज कई बार ब्रेन में कोई स्वेलिंग हो, स्वेलिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे उन्होंने बताया कोई ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए गिरने की वजह से, या रेयरली
ओल्ड एज में हमें ध्यान रखना चाहिए कोई ब्रेन में ट्यूमर या कोई मेटास्टेसिस या कोई गांठ तो नहीं है जो इस एपिलेप्सी को प्रोड्यूस कर सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज जो डिफरेंट होता है बच्चों और अडल्ट में, यूजली अडल्ट में कई बार जैसे हमने बताया ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए तो या ब्लड शुगर चाहिए, कई बार ब्लड शुगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, सोडियम लेवल कम हो जाए, ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, ओल्ड एज वाले और भी मेडिसिन लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले सकते हैं, हार्ट की मेडिसिन ले सकते हैं, शुगर की मेडिसिन ले सकते हैं। कई बार ये मेडिसिन से भी बीपी कम हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है जो हमें लगे सीजर है, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से कई बार सोडियम लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो इन डिफरेंसेस से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों में कई बार एपिलेप्सी की दवाई लंबी देनी पड़ती है, ओल्ड एज में अगर ये एपिलेप्सी ड्यू टू एनी अदर करेक्टेबल कॉज है तो उसमें हमें लंबी दवाई एपिलेप्सी की नहीं देनी पड़ती, बट कॉज को इवेल्युएट करेंगे तो लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा रहता है। सो फ्रॉम आवर डिस्कशन जो भी अभी तक हमने बात की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिजीज को डिफाइन करना, उसके अंडरलाइंग कॉज को डिफाइन करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ओल्ड एज में हमें क्लियर कट जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स जैसे डॉक्टर मार्को ने हमें दिखाया वैसे नहीं मिलते हैं। आमतौर पे ये इन पेशेंट्स में माइनर से सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पे सिनकपी के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं। मैं डॉक्टर भावना से इसी को आगे उन्होंने सिनकपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, मैं उसी को थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ मैम कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सर्कुलेशन और बिकॉज ऑफ सिनकपी, आप उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे कि अगर हमें वो दौरा नहीं लग रहा है और हमें लग रहा है कि कुछ कार्डियक कॉजेज या अदर कॉजेज के कारण थोड़ी देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, तो आप इन पेशेंट्स को किस तरह से इवेलुएट करते हो और किस तरह से आप उसको किसी नतीजे पे पहुंचते हो और किस तरह से उसको फिर ट्रीट करते हो? डॉक्टर धन्यवाद सवाल के लिए। इस बारे में मेरा डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिनकोप था या सीजर था, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा, जैसे या तो कोई तनाव या किसी व्यक्ति के कोई कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री हो या कोई जैसे कोई ड्रग्स ले रहा हो, या कई बार आप लोगों ने एक बड़ी ही कॉमन सिचुएशन आती है, हम लोग सुनते हैं कि यूरिनेशन के समय कोई व्यक्ति बेहोश हो गया जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन सिनकोप। तो पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर हम लोगों को पता लग जाता है कि ये सिनकोप हो सकता है, ये सीजर नहीं हो सकता। फिर सीजर की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होती है, 2 मिनट होती है, सिनकोप कुछ सेकंड्स का होता है। सिनकोप में जैसे ही पेशेंट जमीन पे गिरता है, अगर वेसोवेगल हो तो जमीन पे गिरते ही तुरंत उसको होश आ जाता है। अगर कार्डियक कॉज से अगर सिनकोप है तो हो सकता है कि हमें पेशेंट को उसी स्थिति में हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या कई बार कार्डियक कंडीशंस में भी पेशेंट बेहोश होता है और इमीडिएटली जैसे रिदम नॉर्मल होती है वो होश में आ जाता है और वो हमारे लिए अलार्म होता है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग, अच्छा सिनकोप में भी कई बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लेकिन अगर सीजर है तो इसका एक क्लासिकल प्रोटोटाइप होता है। तो सीजर और सिनकोप के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमको सबसे पहले तो उसके क्लिनिकल हालात पे गौर करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा अटैक के दौरान क्या होता है, बाई स्टैंडर्ड से हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है कि अचानक से व्यक्ति गिर गया, उसके हाथ पांव टाइट हो गए एंड देन पूरी बॉडी में झटके आने लग गए, यूरिन निकल गया, तो ये क्लासिकल हिस्ट्री दौरे की अर्थात मिर्गी या एपिलेप्सी की है। परंतु अगर हमें कोई बाई स्टैंडर्ड ये हिस्ट्री देता है कि सडनली खड़े खड़े एकदम से इनका शरीर पीला पड़ गया, आंखें बिल्कुल बाहर से निकलने आ गई, पसीने से आने लगा और अचानक गिर गए, तो वो हिस्ट्री सिनकोप की है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे में हम लोग ये एग्जैक्टली एनालाइज करें कि भाई कारण क्या है उस पर्टिकुलर अटैक का। तो अगर कार्डियक कॉज है तो हमको सबसे पहले ईसीजी देखना पड़ेगा, पेशेंट का एको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जब भी कोई पेशेंट इस तरह का आता है, एज क्लिनिशियन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, कोई अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है,
कोई ड्रग इंटेक की हिस्ट्री नहीं है, अगर शुगर है तो शुगर लेवल क्या है पेशेंट का, सोडियम क्या है, एंड देन हम लोग अगर सस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये सीजर ही है, तो हम लोग उस पेशेंट का ईजी और एमआरआई या सीटी जो भी फिजिबल है वो हम करा के ब्रेन की स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के नटशेल में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सीजर और सिंकोपी दोनों लगभग एक जैसी चीजें होती है, लेकिन कई सारे क्लिनिकल फीचर्स, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स, इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये सिंकोप है और सीजर है। अगर सिंकोप है तो अपन को ब्लड बायोकेमिस्ट्री, कार्डियक इवैल्यूएशन, ये सब बहुत जरूरी है, और अगर सीजर हम सस्पेक्ट करते हैं तो एमआरआई, ईजी एंड सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, और साथ में डिटेल हिस्ट्री रिगार्डिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल इनटेक एंड फीवर, हेडेक, जो कॉमन हिस्ट्री जो साथ में उस एपिसोड के साथ जुड़ी हुई होती है वो लेना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू मैम। सो इफ आई हैव टू समराइज, या मैं अगर इसको प्लेन शब्दों में कहूँ तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा क्लिनिकल सस्पिशन कि हम क्या सोच रहे हैं उस डिजीज का, कि क्या वो ब्लड सर्कुलेशन कम होने से है या एपिलेप्सी है। कई बार वो उसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल होता है, तो कई बार हमारे को एक्सटेंसिवली इवेलुएट करना पड़ता है ताकि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली शुरू हो सके। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं जो मैं डॉक्टर जयराज से रिक्वेस्ट करूंगा इफ ही कैन आंसर। एक तो क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर जयराज प्लीज, कि क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है? कैन यू हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एज एन अटैक ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? इफ यस, have you ever seen it in your practice? Loss of consciousness is a symptom in multiple sclerosis. It's not a very common occurrence. Very rarely, the patient with multiple sclerosis, when he has a coexisting seizures, Yes, can have a loss of consciousness, but that is not the dictum. That's an exception. That's an exception. right. So it will be an associated epilepsy if we have to correlate it with. Otherwise, multiple sclerosis doesn't present as loss of consciousness. It can be there, and one has to think of seizure as a cause of loss of consciousness, right? If I'm correctly interpreting it. Another important question, somebody, has I think Sudhir Shankar has mentioned migraine can cause temporary loss of memory for a short time or a loss of awareness. How common is it? Have you ever seen? And how will you interpret it? A patient of migraine with temporary loss of memory or a temporary loss of awareness of the surroundings. Yes, sir. I mean, migraine with brainstem auras. Yes. Or can have a loss of awareness, an alteration of awareness, sometimes leading to a loss of awareness. True. It's not a very common symptom, but it can definitely occur. And when a patient presents to us with a loss of consciousness, as Madam Bhavna has clearly told about syncope and seizure, there are a few other things also that can present to us in an OPD setup with a loss of consciousness. And one among them is migraine with brainstem aura, apart from probably even a transient ischemic attack, which can. Right. So we can say it is one of the rare causes of loss of awareness or loss of consciousness, but not a common clinical feature, and it has to be investigated. You just can't label a patient and migraine and say, okay, this is all. If we are negative on all our investigation protocol, probably we'll label migraine as one of the culprits for temporary loss of awareness because of the strategic ischemia of the brain. I think that answers the question from Mr. Sudhir. So taking my questions further, I would like to ask you, as per your experience, how much is the percentage in clinical practice of chance of having brain tumor? Say in for a layman, if we have to explain, there is always, if a person has lost consciousness or was temporarily aware, the biggest fear in their mind is of a brain tumor. So how common
in a given scenario or in a general population is the prevalence of brain tumor as a cause of loss of consciousness? Well, brain tumor leading directly to a loss of consciousness is not very common. Yeah. Brain tumor causing seizures can lead to a loss of consciousness. Right. Bleed into a brain tumor can lead to a loss of consciousness. Right. So these are the common settings in which you have a loss of consciousness in a patient with a brain tumor. So brain tumor is never, mostly doesn't present with directly as a loss of consciousness. Right. So, but overall, given a scenario of 100 patients who are presenting with the loss of consciousness, what will be the relative percentage of patients who will turn out to be brain tumors? So what I would like to say, what is the disease burden of brain tumors per se in the community, which has got the biggest phobia in majority of patients who are coming to you with loss of consciousness or loss of awareness or seizures. So we just want. Well, I'm not aware of the real percentage, Yeah. but among the say I see 100 patients with seizures, and how many of them I would have seen with brain tumors? I would like to put it in that way. Perhaps I would say around 5% because I work in the medical at maximum. So it's not very common. So there are other benign causes which probably are more common for producing epilepsy rather than suspecting a brain tumor and rather than be afraid of it, right? So can I ask one question from Dr. Marco Medina if he is available? Marco sir, are you available for Dr. Chandrasekhar Mishram sir? I think I have to discuss only with the panelists today. So Dr. Birinder, coming back to, can you enumerate one of the common, or let us discuss a bit of common problem in Indian subcontinent as a cause of epilepsy and a cause of loss of consciousness? You briefly mentioned about neurocysticercosis, but believe me, India is probably, along with some of the third world countries, is the epicenter of neurocysticercosis, or a major, area where NCC is quite prevalent, which is again a totally treatable and a curable disease to my understanding. क्या आप न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के बारे में एज अ कॉज ऑफ एपिलेप्सी और एज अ कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, क्या आप व्यूअर्स को थोड़ा बहुत elaborate कर सकते हो about this disease and the myths related to this disease? WHO ने इसको they have pledged to eradicate this neglected tropical disease, and it's a major disease burden in India and in many other developing countries. I would like कि आप थोड़ा सा इस neurocysticercosis, which is a treatable cause of epilepsy and loss of consciousness, उसके बारे में थोड़ा जनरल पब्लिक और हमारे फिजिशियंस को थोड़ा अवेयर करें. Thank you for the question. न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए भी ये ब्रेन में कीड़ा नहीं है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ वो एक सिस्ट होता है. अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें भी वो कीड़ा नहीं है तो 80% जो मिथ्स हैं उसके साथ वो खत्म हो जाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया, ये एक ट्रीटेबल और कंट्रोलेबल कंडीशन है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डायग्नोज करें. अगर हमारा डायग्नोज इसका हो गया है तो हम बजाय किसी क्वैक के पास या इधर जाके उसको निकालने की बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट लें. बिकॉज ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है भी, इसमें जो एक वर्म होता है जो हमारे कई बार सॉइल में होता है, खाने अनहाइजेनिक कंडीशन हम यूज करते हैं, तो ये उसकी वजह से इसके जो सिस्ट हैं वो सर्कुलेट करके ब्रेन में चले जाते हैं, जिसको हम न्यूरोसिस्टिसर्काई कहते हैं. जब ये ब्रेन में जाते हैं तो ये केमिकल डिस्टर्बेंस या केमिकल यू कैन से ब्रेन को इरिटेट करते हैं, जिससे आपको मिर्गेगा तोड़ा पड़ता है.
सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मिर्गी के दौरे की इन ए यंगर एज ग्रुप, जैसे चिल्ड्रन हो गए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। ये कॉमन कॉज है इंडिया में, जैसे आपने बताया, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर्स है। और ये इससे आपको किस टाइप की एपिलेप्सी हो सकती है? एक तो फोकल एपिलेप्सी हो सकती है, जिसमें आपका कई बार एक हाथ या बाजू कांपता है या टांग कांपती है और आप अनकॉन्शियस होता है, या कई बार आपको जनरलाइज्ड और टोटली अनकॉन्शियस स्टेट, जो जैसे डॉक्टर प्रोफेसर मार्को ने दिखाया, जनरलाइज सीजर भी हो सकता है। सो इसका डायग्नोसिस हम फ्रॉम द हिस्ट्री एंड फ्रॉम ब्रेन इमेजिंग करते हैं, चाहे वो सीटी स्कैन हो चाहे एमआरआई हो। सो इसको जब हमें डायग्नोज हो गया तो हमें एक प्रॉपर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो आपको एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देगा, जिससे वो सीजर दोबारा नहीं होगा और आप अनकॉन्शियस नहीं होंगे। सो और इसका ट्रीटमेंट कोई ये नहीं है लाइफ लॉन्ग चलता है, एक बार दवाई खाई तो सारी उम्र खानी पड़ेगी, नहीं। कई बार साल 2 साल में जैसे जैसे ये सिस्ट है ये डिजनरेट हो जाता है तो आपकी दवाई बंद हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको हम निगलेक्ट ना करें और इधर उधर ना जाके एक प्रॉपर वे से जो प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट है, एज यू हैव सेड, WHO ने प्लेज लिया है इसको इरेडिकेट करने के लिए, तो उन्होंने गाइडलाइंस भी ले आउट की हैं, तो हमें वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो जिससे इसको हम खत्म कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम ड्राइव कर रहे हैं, हमें सीजर हो जाए तो हमारी जान को भी खतरा, और जिससे एक्सीडेंट हो उसकी जान को भी खतरा है। और अगर किसी को ये है तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऊपर से आया या किसी ने कर दिया। कई बार हम सोशल मिथ्स में पड़ जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सो न्यूरोसिस्टिक सर्काई में ये सिस्ट आपको यूजली ये बढ़ता नहीं है, रादर देन जैसे एवरी पर्सन हैज हिज लाइफ, सिमिलरली सिस्ट की भी लाइफ होती है, वो जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी को आगे ले जाते हुए ना डॉक्टर वीरेंद्र ने बताना चाहता था कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस को पंजाब में तो ना वो गोभी का कीड़ा कहते हैं और लोग ना गोभी खानी बंद कर देते हैं। Yes, yes, So yes. I actually wanted to convey even to our physicians also that it is more of any uncooked या कोई भी अगर हम वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल को अगर बिना धोए खाएंगे, वो गोभी नहीं, वो गाजर, मूली, शलगम कुछ भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली धोई ना हो और कंटेमिनेटेड हो, स्पेशली विद सीवेज वाटर। यू नो आजकल कितनी कंटेमिनेशन हो रही है रिवर्स में, सारे स्मॉल नल्ला सब। सो वी आर यूजिंग कंटेमिनेटेड सीवेज वाटर फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। तो हमारे वेजिटेबल्स सारे रॉ जो भी हैं, दे आर मोर और लेस कंटेमिनेटेड। वो एक ऐसा साइकिल बना हुआ है ह्यूमन, पिग्स और उसका, कि जिससे अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स, अगर हम अच्छे से सब्जियां धो के नहीं खा रहे हैं, तो सिर्फ पोर्क ईटर्स ही नहीं, हर नॉर्मल पर्सन को ये बीमारी हो सकती है और उसको मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो Manish, से सर, we have an expert on cystic sarcosis, Professor Marco Medina, so you can ask. right, but he will speak in English, so I'll fire one question to him. I actually wanted to engage him, but I couldn't connect with him. If Professor Marco is there, so he can elaborate on the role of neurocystic sarcosis in as a cause of epilepsy in his part of the world. Dr. Marco, if you are available, kindly, sir. So you have to unmute yourself, Dr. Marco, sir. Yeah. Yes. Thank you, sir. So I was just wondering, what is your experience? We didn't discuss in your presentation about the neurocystic sarcosis as a cause of, as a treatable cause of epilepsy. You know, that is one of the biggest burdens in India. And I'm sure you also must be seeing a number of cases. So can you share some of your experience of this treatable cause? Yes, cystic sarcosis or neurocystic sarcosis. Thank you, Professor Modi, for your question. Can you hear me? Yes, sir. Now I can. Professor? Yeah, I can, sir. Please continue. Can you hear me? Yes, sir. Yes, yes, you go on. Okay, excellent.
Yes, about neurocysticercosis. During the last 35 years, we have been working on this subject in Latin America. Right. And evaluating the problem of neurocysticercosis with and our friends from the CDC. So during those years, we found, for instance, in Mexico, that neurocysticercosis was the main cause of epilepsy in patients older than 25 years old. We name it this type of epilepsy late onset epilepsy, and was a very frequent cause of seizures, especially tonic-clonic seizures. Later on, we were evaluating in Salama, Honduras, a cohort of patients that we evaluated for almost 20 years. Those patients, the vast majority of them, the first symptom was a loss of consciousness associated with tonic-clonic seizures. And about 33% of the patients with epilepsy were due to neurocysticercosis. Then we different countries, and Peru, as well as Ecuador and Bolivia were having the same problem. About 30% of the patients having seizures, especially tonic-clonic seizures and epilepsy, were associated to neurocysticercosis. With a consensus with the CDC, we were evaluating what was the main locations of those patients having epilepsy, and were mainly on the temporal lobe and also on the frontal lobe, and usually associated with calcified neurocysticercosis. And usually, patients having a calcified neurocysticercosis can have also a edema around the calcified lesion, and the main symptoms were headache and seizures. So cysticercosis is a very common cause of loss of consciousness associated with tonic-clonic seizure in our region in Latin America. And about the as a preventable cause, we were working in Salama trying to prevent, doing different community intervention measures. For instance, reducing the frequency of tinea solium carriers, as well as improving the water supply and sanitations, and reducing the frequency of cysticercosis among porcine cysticercosis. That was the same approach that Hector Hugo did it in the north part of Peru. So this is a preventable cause of epilepsy, and using those community interventions, we reduced the frequency of cysticercosis from 33% to 13%, more than almost 20% of reduction among people using this community intervention. So this is a very common problem, and I know that is very common in India. But I would like to highlight also that symptomatic seizures, non-epileptic, in non-epileptic patients, can have also as a first manifestation of a edema, a cysticercosis, active cysticercosis on the encephalitic type, which is quite common in children as well. Those are my comments about that, Professor Modi. Thank you, sir.
And same is the observation of most of the neurologists in India. And I take this opportunity on this Brain Awareness Week that this message has to grow louder and louder every passing day, that we have to improve the basic hygiene, the basic standards, and the basic shared minimum, washing off hands, cutting off nails, if nothing more. At individual level, at least these things can be practiced in a big way, and the message can be conveyed, especially of at least, cleaning the raw vegetables. Take more of cooked food. If you are taking raw vegetables, clean it properly. And if this message goes, louder, then probably, we will be able to save many lives and millions of dollars just by simple hygienic measures. And it's remarkable to have such a drastic reduction from 33 to 13%. And I wish we also have the same driving force and the same kind of commitment from government and private agencies to improve the overall standards, so that we are, we are making more awareness amongst the population and improve the living standards and prevent this treatable and curable disease. Thank you for your comments, sir. And taking it for, sir, because our population doesn't understand too much of English, so I'm using both Hindi and English, our native language. So, but I'm sure your comments have been taken well with majority of the participants who are there in this meeting. But taking this discussion further, I would like to, also highlight an important problem, especially faced in the young females. मैं इसमें फिर से डॉक्टर भावना से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स या सूडो सीजर्स या साइकोजेनिक सीजर्स के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा और जरूरी है, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी कॉमन बर्डन फॉर द फैमिली एज वेल एज फॉर द पेशेंट. डॉक्टर भावना, क्या आप उसके बारे में थोड़ा और हमें बताएंगे? If you are available, Dr. Bhavna. Yeah, I am available, Rahul. Yeah, actually, I was disconnected. Can you just repeat the question? Yeah, I just wanted to know, I wanted to give your view on non-epileptic seizures or psychogenic seizures, commonly seen in females, and it causes a lot of anxiety to the whole family as well as to the patient. How you distinguish it, और उसको हम कैसे, treat कर सकते हैं, कैसे family members को comfortable कर सकते हैं उसके लिए? I think Mishram sir, Dr. Bhavna का थोड़ा सा इसके बारे में, it will be great from your experience if you can share your thoughts on psychogenic seizures also. Yeah, I think psychogenic seizures are very important, and वो हमको ये देखना है कि उसका टाइप क्या है. Yes. एक तो साइकोजेनिक सीजर्स है, वो सिचुएशन में आते हैं, वो अकेले कभी नहीं आएंगे, नींद में कभी नहीं आएंगे, उसमें कभी जबान नहीं करती, कभी पेशाब नहीं होती कपड़े में, वो कभी गिरने के बाद सर में चोट नहीं लगती है. उसका जो पैटर्न है वो मूवमेंट का बहुत बिजार रहता है, और वो कभी आवाज करते हैं, बहुत कभी कभी लंबा चलता है, जैसे जिसमें दांत बैठ जाते हैं या क्लेंचिंग ऑफ टीथ बोलते हैं, वो कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा चलते रहता है वो. फीचर्स ऑफ साइकोजेनिक इपिलेप्सी. और किसी के सामने आता है हमेशा, जैसे कुछ इवेंट हो गया, जैसे सास और बहू का झगड़ा हो गया तो बहू को अटैक आ जाएगा, टीचर ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चे को अटैक आ जाएगा, या फादर ने बच्चे को डांट दिया एग्जामिनेशन में, या कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अटैक आते हैं. वो बहुत बार लंबे रहते हैं, और उसमें एक कोई पैटर्न, और उस टाइम यदि ईईजी हम करते हैं तो वो ईईजी एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है. तो इसमें यदि डाउट निकालना है, या ये सीजर्स है या साइकोजेनिक सीजर्स है, तो मरीजों के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप वो अटैक का वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन में कर लीजिए, और जब अगले बार डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं तब वो दिखा दीजिए कि ये अटैक ऐसा था, तो डॉक्टर को बहुत सुविधा हो जाएगी कि ये अटैक पहचानने में कि ये क्यों था. अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो एपिलेप्सी के अंदर जो एमआरआई और ईजी भी डायग्नोज नहीं कर सकते,
वो मरीज की 2 मिनट की वीडियो क्लिपिंग अगर आप लेकर आते हैं, तो जैसे कि डॉक्टर मेश्राम सर ने कहा, बहुत ही सही सटीक बात कि वो वीडियो क्लिपिंग आपको डायग्नोज कर सकती है कि अमुक व्यक्ति को सीजर है या नॉन एपिलेप्टिक अटैक है। सो मेरा ख्याल है हमारा ये सेकंड बड़ा जबरदस्त टेक होम मैसेज है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो पैनिक होने की बजाय अगर हम उस समय पे अब 4 फैमिली मेंबर्स पेशेंट को उठा रहे हैं या मुंह में पानी डाल रहे हैं, उसकी बजाय एक अगर उसका वीडियो बना के हमें दिखा सके तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको डायग्नोज करना और उसको ट्रीट कर पाना। सो इसी को ही आगे चलते हुए कैन आई आस्क डॉक्टर जयराज सर, ये बताइए, इफ द पेशेंट is undergoing seizure in front of you, yeah, family members are there and the patient is actually seizing, so what should be the reaction of the family members? Normally they put water in their mouth or do funny things or try to make him get up, or so what should be the role of family members when the patient is actually seizing in front of their eyes? What is your advice to the caregivers or the family members in that situation? A very good question. The first thing that you do when a patient is seizing is try not to hold or her. Try to remove any sharp objects which are near the patient, which can injure as the patient is seizing. There are some myths which are still prevalent today, especially in southern part of India, where they hand over a key or an iron rod and search for it and put it into the hand of the patient and believe that once they hand it over to the patient, this seizure ceases. I'd like to highlight this very much to the public that the normal duration of a seizure is somewhere between a minute to 2 or 3 minutes or up to 5 minutes, except in the case of a status epilepticus. So by the time they put the rod, the natural duration of the seizure ends. So that is rather a myth that you put something, say some people put cheppers, some stones, some keys or something like that. So nothing of that sort will be done. So remove sharp objects, allow the patient to seize, kindly do not put any objects. And as the patient is towards the end of the seizure, kindly turn them over to one side with the head to the left lateral side on the left side and put the head down on a slightly lower plane so that the saliva comes out, so that he or she doesn't aspirate or swallow the saliva. And another common mistake that I've seen is patients putting their own fingers into the mouths of the patients, and I've seen parents' fingers being cut off during the seizure. So if at all you are trained to put a mouth gag, that's good enough, but otherwise leave it aside. Tongue bites, if they do occur, we can fix them. So after the patient returns to his sensorium, say after a few minutes, kindly wipe off all the saliva, remove the cloths if possible, as per the gender, and try to waken him up. Only after he wakens up and his sensorium is quite good enough, then you can give him maybe something, but not when he is confused. And if he's a known seizing patient, maybe the doctor could have advised some kind of a spray or something like that, which could be given SOS to the patient. But if he's a de novo patient, someone who's had his first seizure in the public, better to take him to the nearest hospital or the health center that is available. Thank you, sir. So for general public या जिनको हिंदी में हमने कुछ बताना है, तो सीजर के दौरान वो किसी को रॉड देना या किसी के नाक पे जुत्ती सुंघाना is not a good idea. It's a myth and it should not be practiced. हमें पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, उसकी चोट लगने से बचाना है, उसको एक किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट कोई भी पास नहीं है उसको दूर करना है और उसका कपड़े थोड़ा ढीले करने हैं ताकि उसको सांस प्रॉपर आ सके, और उसकी पोजीशन हमने एक तरफ करनी है, एक लेफ्ट लेटरल इज द प्रेफरेबल पोजीशन कि एक साइड पे पेशेंट को लिटा दो, मुंह नीचे रखो ताकि उसकी जो मुंह की झाग है वो बाहर निकले, वो फेफड़ों में ना जाए और वो उसमें चोक ना हो जाए अपनी सेक्रेशंस में।
उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। आमतौर पे ये 1, 2 या 4 मिनट दौरा रहता है और अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट को होश आ गया और उसने कोई दवाई मिस की है, आप उसको दे सकते हो, नहीं तो फिर नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में जाके उसको फर्स्ट एड या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हो। घर पे उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसे अनकॉन्शियस पेशेंट के मुंह में पानी डालना, उसको उठाना या उसके मुंह में कोई भी चीज डालना कि उसके जीभ ना कटे, हम उसको और नुकसान करेंगे। तो ये एक टेक होम इम्पॉर्टेंट मैसेज था, हाउ टू behave when a patient is undergoing seizure as a caretaker, as a person who is witnessing it, or a person or a family member. और अगर वो नॉन एपिलेप्टिक है तो डॉक्टर्स यूजली सलाह देते हैं कि कुछ स्प्रे वगैरह घर पे रखा जा सकता है, जिससे कि हम सीजर को इमीडिएटली अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ प्रिकॉशंस जो हम घर पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल इस डिस्कशन में हमने कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में डिफरेंट एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ली। उसमें ना केवल मतलब मिर्गी का दौरा एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, बट इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन का कम होना या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होना या शुगर का कम होना या सोडियम का कम होना या स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर सकती हैं। तो अगर प्रॉपर हिस्ट्री या वीडियो अवेलेबल है या हमारे एग्जामिनेशन पे हमें कुछ मिलता है, तो उस हिसाब से हम उस पेशेंट को आगे इस बेसिस पे, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी अब टाइम की कमी है, नहीं तो हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस करते, बट ब्रीफली हम थोड़ा सा डॉक्टर मेश्राम से कुछ दवाइयों का कि मिर्गी के दौरे का किस तरह से इलाज अवेलेबल है आज से 25 साल पहले और अब में क्या डिफरेंस है। डॉक्टर मेश्राम, थोड़ा सा आप उस बारे में जनरल पॉपुलेशन को और हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए प्लीज अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रकार की एपिलेप्सी है और उसके लिए कौन सा मेडिसिन देना। तो ये पहले जो न्यूरोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है वो तय कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप का एपिलेप्सी है, कौन सा एपिलेप्टिक सिंड्रोम है, उसमें बेस्ट मेडिसिन क्या है। फोकल एपिलेप्सी है तो अलग मेडिसिन रहती है, जनरलाइज एपिलेप्सी है तो अलग मेडिसिन रहती है। तो ये तो एक बात है। दूसरा ऐसा है कि जो आज दुनिया में दवाइयाँ अवेलेबल है, करीब अपने मिर्गी के लिए 25-30 दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की अवेलेबल है। तो जो दुनिया में अवेलेबल है तो उसके 10% रेट में आज अपने इंडिया में अवेलेबल है सब मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार मेडिसिन जब डॉक्टर साहब आप एडवाइस करते हैं तो मेडिसिन रेगुलर लेना है। बीच में अभी मैं ठीक हो गया या 1 महीने के लिए मेडिसिन दिया, 2 महीने के लिए दिया तो मैं बंद करके देखता हूं, तो ये ऐसा कभी नहीं कीजिए। बंद करके देखोगे तो फिर से अटैक आने का और जोर से अटैक आने का डर है, जो कभी कभी स्टेटस इपिलेप्टिकस या बार बार दौरे आने की स्टेज में चला जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी, जैसे बताया है उसी डोज में लेना है, अपने आप डोज कम नहीं करना है या डोज बढ़ाना नहीं है। चौथा, कभी कभी पेशेंट को यदि अटैक आता है तो उस टाइम देने के लिए कुछ मेडिसिन या कुछ जैसे डॉक्टर जयराज ने बताया कि वो कुछ पंप होते हैं या मुंह में कुछ मेडिसिन डाल दे सकते हैं। तो गाल के नीचे समझो दांत बैठ जाते हैं तो गाल के अंदर भी मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मेडिसिन का कोर्स है वो थोड़ा लंबा होता है, 2.5-3 साल का, कभी कभी 4 साल का कुछ एपिलेप्सी के पेशेंट में, और उससे भी ज्यादा लंबा चलता है। जनरली जब 3 साल का ट्रीटमेंट या 2.5-3 साल का ट्रीटमेंट रहता है और अटैक पूरे कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे दवाई कम कर सकते हैं। जनरली इसमें ऐसा देखा गया है कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो ससुराल पहुंचते ही वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं और जाते ही ससुराल में अटैक मिर्गी के आ जाते हैं और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, डाइवर्स तक की केसेस होती है। तो मुझे ये बताना है कि शादी के बाद भी दवाइयाँ बंद नहीं कीजिए, दवाइयाँ हमेशा चालू रखिए। और कुछ मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट बातें
समझना एक बहुत। दो इसको मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहता था कि आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां आ गई या काफी ऐसी दवाइयां हैं जो चाइल्ड बियरिंग एज में विमेन कैन टेक, एंड द चांसेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इन द किड्स या इन्फेंट्स में बहुत कम हो गई है कंपेयर टू आज से 25 साल पहले हमारे पास 4 या 5 मेडिसिन ही थी. बट एज साइंस इज प्रोग्रेसिंग, number of medicines are increasing and number of safer medicines are also increasing. तो हम पेशेंट के प्रोफाइल के मुताबिक वी आर गिविंग मेडिसिन. से चाइल्ड बियरिंग एज के लिए भी प्रेफर कि कुछ ऐसी मेडिसिन मिले जिससे कि अगर वो शादी भी होती है और उसके बाद बच्चे भी होते हैं तो उनको कोई भी नुकसान ना हो. सो प्रोग्रेस काफी अच्छी हो गई है. एंड ये मिथ के एपिलेप्टिक पेशेंट्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. So they are no less from a normal person. Their brain is a bit more overactive, and one should not be, shameful about it, or should not be ashamed that they are taking medicine. It is a kind of a curable disease. और अब child bearing age में भी काफी अच्छी medicines हैं which can be given, and they can lead a very normal life with their husbands and with their family. Sir, बहुत बार ऐसा होता है कि वो हाँ. गायनेकोलॉजिस्ट पर चले जाते हैं और मेडिसिन ले रहे हो तो उसका एबॉर्शन कर डालो या टर्मिनेशन कर लो. तो ये नहीं करना है. न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेना है कि ये मेडिसिन सेफ है या नहीं है. बहुत बार हमने देखा कि सेफ मेडिसिन रहती है और वो फिर भी कर देते हैं, हो जाती है. तो क्योंकि ये मिथ फैला हुआ है लोगों में कि एपिलेप्सी की मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है. So I think we can have one word. Sir, I just wanted to ask one last question from Dr. Marco Medina, if he is available, about just a general awareness about epilepsy surgery. What is the role, for a layman? Where do you place epilepsy surgery? How safe it is, and what is the message to the general population regarding epilepsy surgery? It is available everywhere now. And as per your message to the general population about epilepsy surgery in patients who are resistant to drug treatment, sir. Thank you very much. About epilepsy surgery. Epilepsy surgery has becoming a very important tool for patients with resistant epilepsy or refractory epilepsy. And about 30% of patients having epilepsy can have also a resistant epilepsy, and they are candidates for epilepsy surgery. Around the world, there are many centers that are working on that field. For instance, in Latin America, we are developing a South-to-South collaboration using the ALADE, which is the Latin American Academy of Neurology, training neurologists as epileptologists and neurosurgeons as epilepsy surgeons. So based on improving the human resources, we were improving the epilepsy surgery access and reducing the epilepsy surgery gap. Right. And then also using different types of, let's say, methods that can allow us to choose in a better way the epilepsy surgery candidates, which are MRIs and video EEGs, etc. When you are having a patient with a resistant epilepsy, which means a patient having epilepsy that are not controlled by two standard anti-epileptic treatments, and having a lesion or a problem that can be solved by surgery, such as, for instance, mesial temporal lobe epilepsy that has hippocampus atrophy or mesial temporal lobe sclerosis. Those patients need to be evaluated using video EEG and videotaping at least 3 seizures and trying to localize the onset of the epilepsy, and also using the MRIs as an important tool to correlate with this. And also we need to do a neuropsychological testing
and sometimes you need to go to do other tests, but those are the initial ones. So usually patients having epilepsy surgery, for instance, temporal lobe epilepsy due to mesial temporal lobe sclerosis, the results of the controlling the epilepsy is very high, usually more than 70% of control of the seizures, or even more. So during the last, I can think decade around the world, epilepsy surgery has been becoming available and improving the epilepsy care. And I think that is an important subject that people need to know, that epilepsy surgery can be in a good hands, and with the experts on that field can resolve a major problem. Thank you very much for your comment, sir. So to make people aware in vernacular, epilepsy surgery एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, एक अच्छा टूल है जहाँ पे जो 20 या 30% लोग जिनमें के एपिलेप्सी दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रही, उसमें ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट लोगों को कुछ टेस्टों के जरिए अवेयर करते हैं फॉर सर्जरी ऑल्सो. एंड इन दोज केसेस जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, हम कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट कॉज कि वो क्यों हो रही है, और सर्जरी कुछ % पेशेंट्स में काफी लाभदायक हो सकती है. सो विद दिस आई थिंक हमने एपिलेप्सी के बारे में काफी हद तक चर्चा की, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के काफी कारणों के बारे में काफी चर्चा की. बट मेरे को लगता है कि इसकी डिस्कशन अगर हम कई दिन भी करते रहे, एक एक डिजीज लेके कि क्यों लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई, तो हाइपोग्लाइसीमिया जैसे एक बीमारी है तो उसी में 1 घंटा हम चर्चा कर सकते हैं. बट ओवरऑल अवेयरनेस के लिए आई थिंक वी टच्ड काफी डिजीजेस जो कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर सकती हैं. और अब मैं वापस, मेरा ख्याल है हमने जितने भी क्वेश्चंस या चैट बॉक्स में जितने भी क्वेरीज रेज की थी हमने सभी आंसर कर दी हैं. अब I'll hand over the mic to Dr. Mishram to formally close the session. Yeah, thank you very much, Dr. Manish Modi. Dr. Gagandeep Singh has joined. I think. I must really thank. I would like to welcome Dr. Gagandeep Singh, Dr. Birinder, Dr. Jairaj, and Dr. Bhavna Sharma for pitching in at the last moment. And I'm sorry, I was traveling and it was a very difficult travel. I'm currently in West Godavari in Andhra Pradesh, and we were visiting some primary health centers in relationship to epilepsy and our Welcome Trust project. So thank you very much for. I think it was really very informative. Dr. Marco Medina. Marco, fantastic. I mean, I thank you for joining all the way from South America, even much farther than where any of us would come in, and so much so for the enthusiasm of Dr. Mishram, who very quietly behind the scenes is operating so beautifully and covering the entire week so well. Not just this, but so many other different public awareness campaigns. I mean, he is a real campaigner, and his zeal is just unimaginable. It's whatever we say, whatever little we say about it it will always be little. So thank you, Dr. Mishram, for this. Nirmal is also here, so thank you, Nirmal, for really taking this forward. This this World Brain Week is perhaps, I think it is the best in the world. So there is no doubt that it is the best in the world. Thank you, Dr. Gagandeep Singh. Dr. Gagandeep Singh is the president-elect of Indian Academy of Neurology, and he will be having thoughts on how to carry over the campaign next year.
we have. You are there, so I don't need to worry about it. So the punchline for as far as epilepsy is concerned is epilepsy is a preventable and treatable disease, and don't hide it. Whenever you get epilepsy, जब भी epilepsy होता है, you must consult a doctor. Don't hide it. It's a treatable disease. And we can have a comment from Dr. Nirmal Surya, who is again epilepsy specialist, done so many camps all over the state on epilepsy. Dr. Nirmal Surya. I've been listening very quietly, and it has been a wonderful session. Yeah. Epilepsy, what do I say? Everybody knows how we have been struggling in India to create an awareness, not only awareness, to create the medicine, a regular supply, and we are working on this. I think Maharashtra is a lucky state where epilepsy is being taken care better. The treatment gap from 75% has reduced to 25%. And we are thankful to all the neurologists across the Maharashtra to take participation in the current project. We'll update you as and when about this project. Our next camp is on 14th of next month at Danu, which is about 150 kilometers from Mumbai. Thank you, Dr. Meshram, for asking me to say that. Thank you, Dr. Nirmal Surya. I think we had a very wonderful session, and tomorrow we'll have another wonderful session, and that will be about neuromuscular weakness, and Dr. Satish Khadilkar will moderate this session, and we have the international faculty, Laszlo Vexi, Raisuke Takahashi from Japan, Vexi from Hungary, and David Garce Azorin from Spain. And we have our national faculty, Dr. Sandeep Pal, Shefali Gulati, and Swati Shah and Stuti Nair. So we are looking forward to another wonderful session. I would like to thank Professor Marco Medina. You know, I said that you should join for this session, and he said, okay, when you want me to join, I will join that day. So thank you very much, Professor Marco, for joining and enlightening us and making comments and giving a talk on epilepsy. It's a great to have you always. Thank you very much. And I would like to thank Dr. Manish Modi. You know, he had such a problem, 11th hour problem. He has taken the responsibility, and he had some problem, but he did the session wonderfully well. And I would like to thank Dr. Gagandeep Singh, Dr. Nirmal Surya. What happened to Just Manish? sir, small. I told Brindan that there is a small minor surgery just 2 hours back. What Suddenly, happened? I had to Kushmini said just a foreign body. Foreign body. But Achha. I enjoyed the session thoroughly, sir. Thank you for the opportunity. Please And, take care. I never I'm realized. fine. That's why I kept my video off. It Off. was just Yeah, to check your all of video you. was off. Right. Yeah. And I would like to thank Dr. Malcolm Jairaj, Dr. Bhavna Sharma, and Dr. Birinder Singh Paul. Thank you very much. And I would like to All of thank the audience. all of them have left their busy practices to. It is a good They're all opportunity. very busy practitioners. So, Very good opportunity to learn and use this platform. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very once again. Thank you.